कभी कभी कुछ इंसिडेंसेस इस तरीके से होते हैं कि अगर वो इंसिडेंस नहीं हुआ होता या उस इंसिडेंस में जो अगर किरदार थे अगर वो नहीं होते या वो सेटअप नहीं होता तो शायद लाइफ में आगे की बड़ी सारी चीज़ें जो लाइंड अप थे वो उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से इंटेंडेड था. एंड I'm kind of very thankful. I'll not say thankful. I mean, I'm very grateful to this particular city, which has kind of played its role जिस तरीके से एक्सपेक्टेड थी उस सिटी से. और मैं मुंबई के ज़िक्र कर रहा हूँ. 2002 में मैं यूके गया था पढ़ने के लिए एंड फरवरी में गया था. तो मेरा वीज़ा प्रोसेस जो है 2001 के नवंबर दिसंबर उस दौरान सारी चीज़ें चल रही थी. मेरा इंटरव्यू हुआ था 2000 आई थिंक इधर दिसंबर में या 2002 के जनवरी में. आफ्टर यू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स सो देयर 2 or 3 राउंड्स एटलीस्ट उस टाइम पे हुआ करता था. नॉट दैट आई वेरी क्लियरली रिमेंबर बिकॉज दैट वाज ऑलमोस्ट 20 years बैक, बट स्टिल जहाँ तक मुझे याद है 2 या 3 प्रोसेसेस होते थे. तो फर्स्ट यू सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स. वो मेकर्स चैम्बर्स 4 में था शायद, ब्रिटिश एम्बेसी, तो 4 या 5 में था. सो ऑब्वियसली यू गो देयर, यू स्टैंड इन अ क्यू एंड देन वंस योर नंबर इज़ कॉल्ड और योर नेम इज़ कॉल्ड फॉर दैट मैटर, आप जाके वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं. डॉक्यूमेंट्स को पूरी चेक की जाती है. चेक करने के बाद फिर आपको अगर इफ़ द डॉक्यूमेंट्स आर ओके देन एंड इफ एवरीथिंग इज़ फाइन फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. समटाइम्स द इंटरव्यूज़ हैपन ऑन द सेम डे और समटाइम्स दे विल गिव यू अ डेट फॉर द इंटरव्यू. एंड इंटरव्यू होने के बाद यू आर ऑफ कोर्स आस्क्ड टू गो फॉर योर मेडिकल चेकअप. तो जिस दिन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना था उस दिन आई हैड गॉन टू मेकर्स चैम्बर्स फॉर माई फादर वॉज ऑल्सो देयर विथ मी बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड आई एम नॉट वेरी गुड इन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड ऑल दैट. सो ही वॉज देयर टू हेल्प मी आउट. सो हम लोग ट्रेन से ही गए थे फ्रॉम आवर होम एंड दैट्स द लाइफ लाइन ऑफ मुंबई. एंड वाइल आई वॉज गोइंग डाउन बाय द ट्रेन मेरे आँखों में बहुत सारे चीज़ें सपने you could see in my eyes when I was going towards as and when I was reaching Marine Lines. फिर Marine Lines में हम लोग उतर के वहाँ से कैब लेके we went towards the Colaba and then the Makers Chambers 4 I think it was or yeah 5. तो वहाँ पे गाड़ी टैक्सी रुकी, मैं उतरा. There was a bit of nervousness, there was a bit of excitement. It was winterish. Of course मुंबई में विंटर इतनी कड़ाकी की नहीं होती जितनी फॉर एग्जांपल देहरादून या अदर नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में होती है. बट देन इट वाज स्टिल अ वेरी प्लेजेंट वेदर. द विंड वाज ब्लोइंग फ्रॉम द सी. ऑफ कोर्स डाउनटाउन कोलाबा, नरीमन पॉइंट, मरीन लाइंस, इट्स एक्सट्रीमली विंडी. And winter में with that chilly wind it was making a very different kind of an atmosphere altogether. Taxi से उतर गए. Then of course after walking down to the building I could see it was written British Embassy out there. My heart was kind of slowly the heartbeat was racing because this was it. I had to kind of, this was it. I mean either it's happening now or it's not happening. And everybody had different dreams associated with my going to London. I'm sure my parents would have certain dreams. My mom would have certain individual dreams. My father would have certain individual dreams. Together they would have had certain dreams. I had my own set of expectations or things that I was kind of looking forward to. And those were more to do with the experience of being able to live in a place where I'll have to take all the decisions, small or big, by myself. And the outcomes of it, whether it's good or whether it's bad, वो सारे मुझे ही झेलना पड़ेगा. And उसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता हूँ. So that was the experience I was going to look forward to. And beyond that, of course, the place London, going abroad. At that age, I was 22, I think, or 21 or 22. So there were a lot of things which were there. The freedom for the first time, So ये होती है, as an Indian, child. So ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रहे थे. It was kind of getting overwhelming for me. So my father handed me that bag
and I went up the stairs. There was a queue. Then I gave my name and जो भी procedures होते हैं, I'm forgetting those steps. फिर then I was waiting patiently. एक एक करके मैं लोगों को देख रहा था, and I was seeing a lot of people of my age. I'm sure there were students applying for student visa. कुछ लोगों के शक्ल में खुशियाँ थी, and some were dejected, some were tensed. किसी के papers complete नहीं थे, किसी का interview अच्छा नहीं गया था, and some were kind of happy that they were hopeful things are working out. So ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था, and मैं खुद अंदर ही अंदर अकेले बैठ के analyze कर रहा था. So anxiety बढ़ रही थी मेरी उस टाइम पे, and फिर then suddenly my name came and I was like, okay, time, this is it. Now this is the point of time. This is absolutely about it. I walked down. There was a counter. एक छोटा सा वो window था जिसके नीचे से मुझे documents मांगा गया. There was an Indian lady sitting on the left and an English lady who was on the right hand side, quite middle-aged, around 50s, looked very stern. I gave all the documents and the Indian lady, she scanned through all the documents and papers, and then she gave it to the English lady. She also went through it. उस दौरान my heartbeat was of course racing. अब क्या? And there was like no second chance. So they wouldn't, of course, they're not interested about me as an individual. They were just looking at a student who would be investing in studying abroad, and whether I was worth it. That's what they would be looking at. कोई relationship की बात नहीं थी. So उसके बाद फिर then they had a small chit chat, and I was trying to analyze कि उस chit chat का tone क्या है, and were they happy or something like that. But then वहाँ पे क्या कि I could not hear them, because when they would speak, they would kind of to me they would kind of switch on that microphone or something like that, so that I can hear and they can hear me out. वो बंद था उस टाइम पे. फिर उसके बाद then the English lady looked up at me and she asked a couple of questions regarding why I want to go there, why I want to study abroad, and why London for that place, why that particular school, and do I want to stay there, do I want to come back, what is my future plan. इस तरीके के सवाल मेरे से पूछे गए, and I gave her the answer. and एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि why London, there are so many other places abroad. तो मैंने बहुत ही जेन्युइन आंसर दिया. मैंने आई सेड किसी बिकॉज मेरे को लंदन बहुत पसंद है. जो मैंने इमेजेस, फोटोज़ एक्सेट्रा मैंने देखा है, जो फिल्म्स मैंने देखा है, आई एम वेरी इंस्पायर्ड by the way they've kept their culture, and उसको मैं नज़दीकी से महसूस करना चाहता हूँ while I'm studying out there. I don't know, probably that answer kind of clicked, because that was not a made up answer. This is a true from the straight heart answer. I said कि ठीक है यार, होएगा तो होएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जो है वो मुझे सच बताना चाहिए. And then she looked at me for a moment or two, and eyes, spectacles, I said this. She looked at me like this for a moment or two, and she said okay. She went off, she went away, and I was like, fuck, now what? Kya? Performance anxieties and all that. Then I asked the lady ki now what? She said okay, you can collect your passport after 4-5 days, whatever that day, she said. And then I asked, so what does that mean? Does that mean I've got my visa? She just looked at me and gave a small smile, and she said, आप उसके बाद आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा. So I knew, okay, मेरा visa हो गया, and I was very happy. I came back, I got the date, and I told my father that it's been done, and I think after 5 days I have to come down, get my take the passport, or they would give me a slip or something like that, and get my medicals done at Breach Candy. I mean, they will suggest which doctor it is, and then get that report and submit back to the British consulate or embassy, whatever that is called, और फिर मैं अपना passport with the visa stamp ले सकता हूँ. And so that next day, after I think 5 days or something, I this time I told my dad कि आप मत जाओ, मैं अकेला चला जाऊँगा. He had office anyway. I said ठीक है, अभी मेरे को कुछ करना भी नहीं है, जिस मेरे को जाना है मेडिकल करवाना है. So I went again the same route, took a train, got down at Mahalakshmi. I remember very clearly, and वहाँ से मैंने कैब लिया. नहीं, I think मैंने कैब लिया था. So I took a cab, got down at Bridge Candy, and that is the first time from a distance I had seen Arjun Rampal, who was there for some reason, and his wife Meher Jaisia. So anyways, so I went. There was an old doctor, there was a nurse,
and they asked me to lay down in the bed, and then they kind of were examining me. I was like, wow, not bad. So anyways, सब करने के बाद then I asked the doctor, is that okay? Am I all right? Because डर तो था काफ़ी सारे मेरे अंदर. Then doctor said, yeah, you're fine. So he just gave me an okay stamp, and I was like so excited. And then I had to, I think, go back to the what do you call it, the consulate. मुझे याद नहीं उसी दिन या उसका 2-3 दिन बाद. So जो okay stamp वाला paper लेके मैं गया, and they got my and gave the paper to the concerned authorities, and they said कि okay, come back in this date and collect the visa. So here was the big day. So finally मैं excited होके, and this was sometime I think in January if I am not mistaken, 2001. फिर मैं इट्स अ ब्यूटीफुल डे. थैंकफुली मेरा कॉलेज वॉलेज सब ख़त्म हो गया था. अब ऐसा लग रहा था कि बस अब लाइफ इज़ सेट. नो पढ़ाई, नो एग्जाम्स, नो सेमेस्टर्स, नथिंग एट ऑल, एंड आई एम गोइंग टू लंदन. दैट वाज सच एन एक्साइटिंग थिंग टू हैपन. फिर उसके बाद आई टुक एज़ यूजुअल द ट्रेन. एंड उस दिन मैं ट्रेन के बॉम्बे में ना लोकल ट्रेन्स में क्या होता है कि आप जब खाली होता है, भीड़ में तो है ही, बट जब खाली होता है यू नो अ लॉट ऑफ पीपल. आई ऑल्सो लाइक टू स्टैंड बाय दैट दरवाजे के पास बिकॉज इट्स ओपन, एंड रॉड पकड़ के आप खड़े होकर बाहर देखते रहो, एंड हवा मुंह में लगता रहा. एंड आई वाज हैविंग दैट ब्रीज पासिंग, हिटिंग माय फेस, एंड ट्रेन वाज गोइंग. अंधेरी आया, अंधेरी के बाद आपका व्हाट यू कॉल, एंड ऑल दोस सांता क्रूज, then Parla, then Bandra, and then of course what you call all this the Lower Parel, then Mahalakshmi, and all this stations came, Marine Lines came, and finally Church Gate came, and train kind of platform में रुका. and रुकने के बाद I got down. I was so happy. I remember बाहर निकल के I was feeling excited because I think I accomplished a lot of things which there was a lot of cloud in the air. There was a lot of क्या बोलते हैं ना, uncertainty was there कि वो हो पाएगा कि नहीं, because मेरे ही आंखों के सामने बहुत लोग का rejections हो रहे थे. and then there were a lot of things कि अगर ये नहीं तो फिर क्या, what am I supposed to do? I mean so normally उस एज में होता है. and so and already that expectations I had already built up कि भाई मुझे ये करूँगा. the shoppings and everything were kind of धीरे धीरे planning हो रही थी. so obviously it not materializing just because of my visa process did not go well. Or if I can very honestly say, अगर नहीं होता तो it would just have been because of my interview, because all the documents were spick and span. My father had kind of made it very clearly. और अगर नहीं होता मेरा वीज़ा, it would ideally because of my interview did not go well. So वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था उस एज में. तो खैर all these were crossed, the hurdles were crossed, and finally I was going to collect my visa for London. And I went and I gave my details. I think token या कुछ तो देना पड़ता है, slip. And they said okay, and they gave me a counter number, and then my number came, and I went, collected my visa. The same lady was there, and she looked at me and she said congratulations, and I hope you do well in your life. And I looked, smiled, and I came back, and I was like yeah. So उस टाइम पे सेल फोन्स तो होते नहीं थे. तो what I did was जो पब्लिक टेलीफोन था वहाँ पे येलो कलर का बॉक्सेस होता है या रेड कलर के बॉक्स, कॉइन डालना पड़ता है. और कुछ में वो टाइमर्स लगे होते हैं इन दी पब्लिक टेलीफोन बूथ्स जो शॉपकीपर्स के पास होते हैं. सो नंबर मिनट बाय मिनट दे विल चार्ज यू. तो एनीवेज वन ऑफ दोज लेके मैंने घर में फ़ोन किया. आई कॉल्ड अप माय मॉम एंड सेड यस आई हैव गॉट इट. देन द सेकंड कॉल आई डिड टू माय फादर्स ऑफिस एंड आई सेड इट्स विथ मी, एंड वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड. इंडिविजुअल रीजंस, सबका रीजंस अलग अलग थे जैसे मैंने आपको बोला था, बट द कलेक्टिव थिंग वाज वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी. Now it was time to get ready, and I was already thinking मैं महालक्ष्मी मैं मरीन लाइंस नहीं, मैं चर्च गेट स्टेशन में आया था. आई थिंक चर्च गेट या मरीन लाइंस, आई एम फॉरगेटिंग, बिकॉज मेरे आंखों के सामने जो विजुअल है ना वो मरीन लाइन स्टेशन का है. बिकॉज उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त एक इंसिडेंट हुआ था, विच इज़ वॉट दिस एंटायर वीडियो इज़ फॉर, जो मैं अभी बोलने वाला हूँ. उसके बाद मेरे हाथ में वीज़ा लेके देन आई took a cab and came down to the चर्च गेट स्टेशन. और चर्च गेट स्टेशन में वहाँ पे मैंने वड़ा पाव खाया. मैंने आई थिंक आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई वाज सो एक्साइटेड.
एंड खाने के बाद फिर आई बोर्डेड द ट्रेन to my home. And then I was so excited that what I had done was I had kept my visa in my pocket. I was wearing a trouser, formal trouser, because वहाँ पे formals पहन के जाना बनता था, kind of thing, you know. So खैर I put my passport in my pocket and मैं वो ट्रेन का जो दरवाज़ा है वहाँ पे मैं खड़ा हो गया. ट्रेन निकल पड़ी and I was elated, happy. सोच रहा था क्या करूँगा लंदन में जाके, you know, कहाँ घूमने जाऊँगा, and so many things were in my mind. I was like, okay. Then कब चर्च गेट से मरीन लाइंस पहुँच गया मुझे समझ में नहीं आया. एंड मरीन लाइंस से इट मूव्ड फर्दर एंड धीरे धीरे करके वो महालक्ष्मी स्टेशन आया. नाउ दिस स्टेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट. महालक्ष्मी स्टेशन जहाँ तक मुझे याद है. और मैं रॉड पकड़ के खड़ा हुआ था वहाँ पे साइड में. एंड द ट्रेन हैड हॉल्टेड. वो हर आई थिंक कुछ सेकेंड्स वेट करते इन एवरी स्टेशन. ट्रेन वाज वेटिंग एंड आई वाज लुकिंग आउट एंड देन द ट्रेन वाज जस्ट अबाउट टू लीव. सीटी मारा ट्रेन ने. वो रेड लाइट से एम्बर होके वो ग्रीन हो गया एंड द ट्रेन वाज जस्ट अबाउट, द लोकल वाज जस्ट अबाउट टू लीव. एंड देन सडनली समबडी सेड, आई हर्ड अ फेंट वॉइस, हेलो भाई, you know, the way they spoken, भाई इधर देखना. I was like, who is this idiot, you know. And I said, पता नहीं मैं लंदन जा रहा हूँ, kind of thing. No, so anyways I turned around and नीचे देखा कि एक आदमी, young guy, some little probably older to me, you know, he pointed out, भाई ये क्या, नीचे देखिए क्या आपका है. मैंने बोला क्या? अरे नीचे आपका पासपोर्ट पड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म में. You know, पासपोर्ट? So fuck. It can't be possible. I said, नहीं मेरा नहीं भाई साहब एक बार देख लो, पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंट है. तो आई जस्ट लुक डाउन एंड देयर वाज अ ब्लैक पासपोर्ट एंड द ट्रेन हैड जस्ट स्टार्टेड टू लीव. मैंने अपना पॉकेट में हाथ दे के देखा एंड द पासपोर्ट इज फकिंग गॉन. एंड आई इमीडिएटली जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रेन एंड आई टुक द पासपोर्ट एंड आई ओपनड. फक, दैट वाज माय पासपोर्ट. द पासपोर्ट had fallen out of my pocket and it had fallen in the platform. And had it not been this gentleman or guy or whoever he was, उसने मुझे shout नहीं किया होता, उसने नहीं देखा होता, my passport would have gone. And it was the same day when I had got my visa stamped. Can you imagine the kind of situation it would have led up to? मतलब emotional situations तो छोड़िए. I mean, the university fees was paid. My flight tickets were availed. My stay in UK was done. The entire family was ready. And I've got the visa. I've just called an hour back. The visa is in my hand. And I'm on that train, local train. I'm coming back alone. And the visa is not there. It was there some time back and now it's not there. My passport is not there. So can you imagine the kind of I don't know situation it would have created in every aspect. वो सोच के मेरे को shudder होता है. Obviously, I mean, at this age, at this point of time in my life, it really doesn't matter. अगर भगवान ना करे कभी ऐसा मेरा बेटा के साथ you know होता भी है, ठीक है ना, बिग डील. और आ जाएगी, 1 साल बाद चले जाना, दोबारा अप्लाई कर लेना, इतना टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है. इट्स ऑल राइट, चिल. वीज़ा ही तो नहीं मिल गया, खो ही तो गया है. यू हैव नॉट लॉस्ट योर लाइफ. दैट्स हाउ आई वुड, यू नो, नाउ आई वुड टेक इट. बट देन थिंग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन दोज डेज वर वेरी डिफरेंट. So I was like, damn, how I could be so careless, you know, that word, careless. Thankfully, I got the passport मैंने देखा and I was like, fuck in hell, man, fuck. इस बार passport को मेरे ऊपर वाले pocket में रखा and I came back home. Honestly, that was a day which kind of did shook me in a very different way also. And I was like, everything that was building up had come to that particular point of me getting the visa, and I had got the visa. And now I was coming home, everything was ready, and I would have lost the visa. But thanks to the city and thanks to that
people in that city, कोई बहुत ही आम आदमी था, if I would call it like that, बहुत ही नॉर्मल, एंड उसको कोई लेना देना नहीं था कि किसका पासपोर्ट, क्या फ़र्क पड़ता था उसको बताने के लिए कि भैया किसका पासपोर्ट है, क्यों उसको मगज. ही जस्ट पॉइंटेड आउट में, प्रॉब्ली बिकॉज आई वॉज द ओनली गाय वाज स्टैंडिंग आउट देयर, एंड वो नीचे गिरा हुआ था, एंड ही जस्ट सेड, एंड ट्रेन वाज जस्ट अबाउट टू लीव. मैं तो उसको देख भी नहीं रहा था, आई वॉज इन दैट लंडन जोन. तो उसने पॉइंट आउट किया, एंड things happened the way it was intended to happen. But probably from that point of time, I became a little more humble, a little more to the ground. And ठीक है, London and paisa and money and all those, everything would happen, and they have their own importance. But I was very grateful to that guy who kind of gave me a shout. I mean, that's all I could say. I, of course, have never got an opportunity to meet him, nor did I have the time, energy. There were a lot of things which were in the pipeline. So life moves on. But very, very important incidents. Well, I hope आपने ये किस्सा again आप लोगों को अच्छा लगा. And there are so many others. We'll come back to you with all those incidences which are slowly and slowly popping up in my mind as I'm saying a story like this to you. And I hope you've watched all my other stories in this series, and also you're catching up with the other series which are running parallelly. Thank you so much, and have a wonderful day, evening, night, whichever part of the world you are.